Welcome to your English class. Today we are going to revise the MCQs of chapter 2nd, the address. Okay, and here are some questions in front of you. First question is, how did Mrs. Dorling treat the author when the author visited her? Okay, you know that in the chapter when the author visited Mrs. Dorling, okay, she did not welcome her. So हम options check कर लेते हैं बेटा. First option is warm and welcoming, okay, cold and inhospitable, overjoyed, both A and C. ओके, सो ओवरजॉयड वाला हमें पता है ऑप्शन नहीं था, वार्म एंड वेलकमिंग ऑप्शन भी नहीं था. ओके, हाउ मिसेस डॉर्लिंग वॉज बिहेविंग, शी वॉज बिहेविंग कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल. ओके, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन. हु इज़ हर? ओके, कौन थी वो? ओके, तो हमें आंसर बताना है कि किसने वो उसको क्या दिया था. मीन्स शी रिफ्यूज़ टू रिकॉग्नाइज हर, उसने पहचानने से मना किया था. मिसेस एस, मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर, मिसेस डॉर्लिंग और मिसेस एस डॉटर्स. ओके, सो वी नो द आंसर. सो आर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इन व्हाट अटायर डिड द ऑथर फाइंड मिसेस डॉर्लिंग. ओके, मिसेस डॉर्लिंग को किस अटायर में उसने देखा? मिसेस ऑथर्स मदर्स ग्रीन निटेड cardigan, author's green knitted cardigan, author is unable to recognize it, not mentioned in the story. Okay, so we know that when the author visited Mrs. Dorling, she saw her wearing her mother's green knitted cardigan. So A option is the correct option. Next question is here, I thought that no one had come back. Why does Mrs. Dorling say this? Okay, because she was happy to see the protagonist, because she had been waiting for the protagonist for a long time, because she thought everyone in the protagonist family were dead. Okay, none of the above. So we know that I thought no one had come back. ओके, तो किस मिसेस डॉर्लिंग ने ये चीज़ क्यों कही? बिकॉज शी थॉट एवरीवन इन द प्रोटैगनिस्ट फैमिली वर डेड. ओके, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next, fifth question is here, what was the address that author's mother asked her to remember? ओके, ऑथर की मदर ने कौन सा एड्रेस लर्न करने के लिए बोला था उसको रिमेंबर करने के लिए? सो वी नो द आंसर, दैट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नंबर 46 मार्क ऑन ई स्ट्रीट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, मिसेस डॉर्लिंग्स वॉज डैश ऑफ मिसेस एस. ओके, डॉर्लिंग कौन थी मिसेस एस की? एन ओल्ड एक्वेंटेंस. ओके, एक पुरानी जान पहचान की थी. Next question is here, Mrs. Dorling took the possessions of the things on the pretense of using them, selling them, keeping them safe, both A and B. Actually में क्यों लिया था? दिया तो इसलिए था ना. Okay, to keep them safe. So C option is the correct answer. Next question is here, was the author convinced with her mother's idea of letting Mrs. Dorling take away all their things? Okay, absolutely, partially, not at all, not mentioned in the story. Was the author convinced with her mother's idea? Okay, क्या author convinced थी? So option number B is the correct option, partially. How does the author describe Mrs. Dorling when she saw her the first time during the war? ओके, जब पहली बार उसने ड्यूरिंग द वॉर उनको देखा, ओके, तो किस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया? अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, अ वुमेन विद अ राउंड बैक, अ वुमेन विद अ स्ट्रेट बैक और नन ऑफ द अबव. डॉर्लिंग को कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया? अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक. ओके, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next is here, why did the author wait for such a long time before visiting the address? Okay, because she was not interested, because she was afraid to confront her mother's belongings. Okay, both A and B and none of the above. दोनों ही चीज़ें थी, because first of all the author was not interested at all, और second thing she was afraid to confront her mother's belongings. Okay, so option number C is the correct option. Next question is here, why had the author come to visit Mrs. Dorling? क्यों आई थी? Because Mrs. Dorling had belongings of the author's mother, because Mrs. Dorling called her, because she missed Mrs. Dorling. Okay, none of the above. So we know the answer of this question beta. First option is because Mrs. Dorling had belongings of the author's mother. Next question is here, who opened the door upon the author's second visit to Mrs. Dorling's house? ओके, किसने डोर ओपन किया? मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर, मिसेस डॉर्लिंग्स हस्बैंड, नो वन ओपन द डोर. जब सेकेंड विजिट थी तो डॉर्लिंग के हाउस में किसने डोर ओपन किया था? मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर. नेक्स्ट इज हियर, अनलाइक मिसेस डॉर्लिंग, हर डॉटर वॉज डैश टूवर्ड्स द ऑथर. ओके, कैसी थी वो? रूड, मैच्योर, हॉस्पिटेबल और मीन. ओके, सो अनलाइक मिसेस डॉर्लिंग, हर डॉटर वॉज
quite hospitable towards the author. Next is here, what was the protagonist's reaction when she entered the living room? जैसे ही उसने लिविंग रूम में एंटर किया तो उसका क्या रिएक्शन था? थ्रिल्ड, इमोशनल, नर्वस और हॉरिफाइड. एक्चुअली व्हेन द प्रोटैगनिस्ट एंटर्ड द लिविंग रूम, ओके, हाउ शी वाज फीलिंग? शी वाज हॉरिफाइड. नेक्स्ट इज हियर, आई वाज इन अ रूम, I knew and did not know what did author mean by this. Okay, वो क्या कहना चाहती है इस लाइन से? She saw familiar things but in an unfamiliar surroundings. She saw unfamiliar things but in familiar surrounding. She did not recognize the things she saw. She did not want to remember anything. ओके, जैसे ही उसने रूम में एंटर किया था और ये लाइन बोली थी तो उसका कहने का मीनिंग ये था कि वो चीज़ें तो जानी पहचानी थी बिकॉज ऑल द थिंग्स बिलोंग टू हर मदर. Okay, but in an unfamiliar surrounding. So A option is the correct option. Next question is here, how does the author describe the living room? Living room कैसा था? Muggy smell, strange atmosphere, sophisticated, or all of these. Okay, we can know that we know the answer of this question. Okay, so option number D is the correct option. Okay, how does the author describe the living room? The author describes the living room as muggy smell, okay, strange atmosphere, sophisticated, and we know the answer. So option number D is the correct option. Next question is here, in what condition did the author find the living room? Okay, जैसे उसने लिविंग रूम को देखा तो किस कंडीशन में था? हैपैजर्ड, वेल अरेंज्ड, एम्प्टी और ओल्ड फैशन. अभी हमने डिस्कस किया ना पीछे, मगी, स्मेल, सोफिस्टिकेटेड. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज हियर, द ऑथर रिमेंबर्ड दैट द वुलन टेबल क्लॉथ हैड. ओके, वुलन टेबल क्लॉथ पर ऑथर को याद था कि क्या है? एन इंक मार्क, अ डिफेक्ट, अ बर्न मार्क और नन ऑफ द अबव. Okay, so C option is the correct option. A burn mark had there on the woolen table cloth. Next question is here, according to the author, when do we notice the things in the house? Okay, when they are out of our sight, when they are used, when they are shown, and all of the above. According to the author, when do we notice the things in the house? कब हम नोटिस करते हैं? when they are out of our sight. So A option is the correct option. What was the silver that the author was once asked to clean by her mother? Okay, क्या किस सिल्वर की बात हो रही है? ज्वेलरी, कटलरी, स्कल्पचर, स्टोन्स. ओके, व्हेन द ऑथर वाज वंस आस्क्ड टू क्लीन बाय हर मदर, तो क्या बोला था उनकी मदर ने उनको क्लीन करने के लिए? एंड इट वाज कटलरी. Okay, so B option is the correct option. So this is it with the today's lecture बेटा. एड्रेस चैप्टर के हमने MCQs डिस्कस किए हैं. We will discuss the remaining chapter very soon. Thank you.